All right. The students, today we will discuss the first chapter of from our textbook First Flight. Name of the chapter is A Letter to God. It is written by G.L. Fluentis. I'm sure you must have read this story multiple times already, as it is the first chapter of the textbook. तो रीडिंग तो मल्टीपल टाइम्स हो ही गई होगी. And let us have a quick summary of the chapter so as to help you to revise the chapter. All right. So, what do we see in this chapter? We see that there is this farmer named Lencho who lives with his family. वो अपनी पूरी फैमिली के साथ एक आइसोलेटेड घर में रहता है. वैली में उसका घर है, ठीक है, वहाँ वो रहता है विद हिज फैमिली. ही हैज़ वाइफ एंड ही हैज़ फ्यू किड्स एज वेल. एंड हम देखते हैं उसने कॉर्न की खेती कर रखी है. एंड इट इज़ द टाइम व्हेन दे आर एक्सपेक्टिंग अ गुड शावर. ओके, वो होप कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छी सी बारिश हो जाए, बिकॉज दैट विल हेल्प हिज क्रॉप टू बी really really good, and it will ensure his secure survival for the rest of the year. So he is hoping, and we see him talking to his wife, discussing with his wife that he is expecting a good harvest this year, and that a lot of it depends upon the rain, the shower. Okay, so they are waiting for that, and we see him saying that उम्मीद है आज बारिश होगी. And then it is the evening time. The family is about to start with their dinner. The wife of Lencho, she was cooking dinner, and then suddenly they saw that they heard the clouds coming, clouds gathering, and बारिश भी शुरू हो जाती है. First it started with smaller raindrops, and then those raindrops turned to bigger raindrops. And Lencho commented by saying, he said that these small raindrops are like 5 rupees, 5 cents, 5 cents coins, that is. And these bigger drops are like, was it a cent? Let me see. Okay, coins only. Okay, smaller raindrops are like 5 coins of 5, and these larger or bigger raindrops are like कॉइन ऑफ 10. ठीक है. सो एंड देन देखते ही देखते वो उम्मीद कर ही रहा था, एंड ही वॉज बीइंग हैप्पी, बीइंग होपफुल. सडनली बारिश changed into this hail storm. ओले गिरने लगे. And you know hail storm is not good for any type of crop, let alone our corn crop जो कि fragile भी होती है comparatively. और बहुत ओले गिरे. देयर वाज अ लॉट ऑफ हैवी हेल स्टॉर्म वाज देयर. बच्चे तो छोटे थे, लेंचो के बच्चे. दे डिड नॉट नो व्हाट रेपरकशंस दिस हेल स्टॉर्म विल हैव ऑन देयर फैमिली सर्वाइवल फॉर द ईयर. तो वो हेल स्टोन देख देख के खुश हो रहे थे, अपने हाथ में बटोर रहे थे. दे वर बिकमिंग हैप्पी, एंड लेंचो वाज बिकमिंग disappointed as the hailstorm kept going on. Finally जब hailstorm ख़त्म हुआ है, he went out and he saw how much destruction this hailstorm has brought to his cornfields. कुछ बचा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं था. There was only hailstones and destroyed crops that could be seen. बहुत बहुत परेशान हुआ, बहुत सैड हुआ, बहुत होपलेस फील करने लगा लेंशो. एंड फिर उसने सोचा, नाउ व्हाट विल वी स्टार्व फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर. स्टार्व मतलब भूख से मरना. क्या हम भूख से मरने वाले हैं बचे हुए साल में? अब क्या होगा? बहुत वरीड फील करता है. एंड देन Lecho was a believer. He was a believer of God, staunch believer. So he decided, इस दुनिया में maybe nobody else can help me, but there is just one entity I can ask to help from, and it is no other than the God. And भगवान को तो सब पता होता है. He knows from what kind of condition I'm going, and he will help me. So he decides to write a letter to God and ask for 100 pesos. Like, ही इज़ नॉट ग्रीडी. उसने ज़रूरत से ज़्यादा पैसा नहीं मांगा. उसने सिर्फ उतना पैसा मांगा जितने में उसे दोबारा मार्केट से ख़रीद के बीज वगैरह
जो भी उसको नीडेड सामान है वो सब जुटा करके दोबारा खेती करनी है, प्लस जब तक वो खेती पक नहीं जाती उसकी फैमिली का गुजारा हो जाए। तो ये सब जोड़ जाड़ के 100 pesos उसने गॉड से मांगने का डिसीजन लिया। सो ही रोट अ लेटर and he decided to go and cast the letter. So he goes to post office for that purpose, and after casting the letter into the post box he goes back. Now the employees of the post office, they were collecting, they were taking out the letters from the post box, and they were checking कौन से एड्रेस पे किसको भेजना है, and then they saw this letter, and जो postman था, he started to laugh right at the folly, at the innocent folly of this farmer who has presumably written a letter, addressed the letter to God. तो वो बहुत ज़्यादा हंसता है, हंसते हंसते वो लेटर, पोस्टमैन लेटर दिखाने आता है पोस्ट मास्टर को। पोस्ट मास्टर जो कि यहाँ इस पोस्ट ऑफिस का हेड हुआ, आप कह लीजिए, उसको दिखाने लाता है। तो पहले तो अपॉन रीडिंग एंड सीइंग द लेटर एवरीबडी शेयर्ड अ गुड लाफ, सब हंसे, सबको फनी लगा। एंड देन द पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर, ही थॉट दैट, लेकिन look at the purity, look at the innocence of this man. He is so innocent, he has such unwavering faith in God that he decided to start correspondence with God. Like wow, इस तरीके का faith, इस तरीके का belief, trust कहाँ देखने को मिलता है। So he decided कि इस आदमी का भरोसा टूटने नहीं देना है, we should not let his faith to be put at stake. And एक ही तरीका है इसका, we should reply and we should help him out with whatever he has asked in the letter. So obviously किसी के पास इतने पैसे तो नहीं थे 100 pesos, so they decided to contribute. सबने थोड़ा बहुत दिया, जो जितना दे सकता था, and postmaster even asked his friends and co-workers, है ना, दोस्तों वगैरह से भी उसने मांगा कि ऐसा ऐसा केस है, we want to help him, do help with whatever you can. People came forward and they were able to manage, I guess, 70 pesos, if I recall correctly. Do let me see. I have the textbook with me. God of the money I asked, only 70 pesos reached me, right? So they were able to gather only rupees 70 pesos, and they put them in the envelope, and they waited for Lencho to turn up and ask for the letter. So कुछ टाइम बीता and Lencho आता है to the post office and he says क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है, एंड पोस्ट ऑफिस वाले चुपचाप से उसको वो लेटर हैंड ओवर कर देते हैं। एंड हम देख सकते हैं कि nobody is trying to pay attention, look at him directly, but they are, they have their eyes on Lencho without being very obvious about it, कि वो भी देखना चाहते हैं लेंचो के चेहरे पे कैसा अच्छा सा एक्सप्रेशन आएगा when he will find out the help inside the envelope, स्पेशली पोस्टमास्टर जिसने सारी हेल्प इनिशिएट करी थी। Very excited. So Lencho opens the envelope and there is no out of ordinary expression on his face. उसको तो पूरा भरोसा था गॉड पे कि भगवान तो है ही, भगवान तो मेरी दिक्कत जानते ही हैं, भगवान तो मेरी मदद करेंगे ही। तो उसके चेहरे पे कोई भी सरप्राइज या शॉक का एक्सप्रेशन नहीं था अपॉन सीइंग द लेटर एड्रेस्ड बाय गॉड टू हिम, है ना, एड्रेस टू हिम बाय गॉड। बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई उसे इस बात की। उसने बिल्कुल नॉर्मली एनवेलप खोला एंड देन ही सॉ 70 pesos, सो ही गॉट एंग्री कि इसमें 30 pesos कम है। सो ही डिमांड्स, नॉट आस्क, ही डिमांड्स द पेपर एंड द पेन फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस वर्कर्स, एंड बहुत ही जल्दी जल्दी गुस्से में एंग्रीली ही वॉज राइटिंग समथिंग, लेटर को उसने बंद किया एंड ही पोस्टेड इट, और उसके बाद वो चला गया। उसके जाते ही पोस्टमैन ने वो लेटर निकाला एंड देन दे रेड कि लेंचो जवाब में क्या लिख करके गया है। एंड लेंचो रोट वेरी आइकॉनिक, लेंचो सेड, गॉड ऑफ द मनी that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. So he said,
भगवान जितना भी पैसा मैंने आपसे मांगा था उसमें से सिर्फ 70 पेसोस मुझे मिल पाया है और 30 पेसोस मुझे नहीं मिले हैं, तो आप मुझे 30 पेसोस और दे दो बिकॉज आई नीड देम, बिकॉज उसने बहुत जोड़ तोड़ के ही भेजा था, बिल्कुल एग्जैक्ट पैसा मांगा था, ज़्यादा नहीं मांगा था। सो ही सेड आई नीड दोज 30 पेसोस, बट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सेंड आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा। ये पोस्ट ऑफिस वर्कर्स बहुत ज़्यादा चोर हैं, दे आर द बंच ऑफ क्रूक्स, दे हैव टेकन अवे माई 30 पेसोस, दैट्स वाई आई गॉट ओनली 70 पेसोस, बिकॉज यू बीइंग अ गॉड ऑब्वियसली आपने तो मुझे 70 नहीं भेजे होंगे, यू मस्ट हैव सेंड मी 100, but these crooks, these bunch of crooks, the employees of post office, they took out 30. So kindly send me rest of the 30 pesos and this time send it to my direct address. ऐसे कह के वो अपना लेटर एंड कर देता है, एंड यहीं पर स्टोरी एंड होती है। एंड बहुत क्वेश्चन बनता है ये टू पॉइंट आउट द सिचुएशनल आयरनी और जस्ट आयरनी इन द चैप्टर, टू विच यू विल से दैट बहुत सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी आयरनीज तो बहुत मिल जाएगी, मेन जो बड़ी सिचुएशनल आयरनी हम चैप्टर में देख सकते हैं, इट वॉज दैट द पोस्ट ऑफिस वर्कर्स दे expected, hoped for some kind of thanks, gratefulness on the part of लेंचो, लेकिन एंड लाइक उन्होंने अच्छा काम किया था तो दे वर एक्सपेक्टिंग गुड वाइब्स, लेकिन हुआ क्या, लेंचो टू कॉफिन्स, उसको लगा कि यही लोग चोर हैं, तो जिन्होंने अच्छा काम किया उन्हीं के ऊपर ब्लेम लैंड हो गया बाय लेंचो। सो दिस इज द सिचुएशनल आयरनी, यू हैव डन गुड बट यू डिडंट गेट द क्रेडिट ऑफ दैट, rather you got blamed for stealing the money. In a very humorous way, it is the situational irony. उसके अलावा आयरनी, यू नो आयरनी क्या होता है, जब हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और उसका उल्टा हो जाए। तो पोस्ट ऑफिस वर्कर्स ने यहाँ पर तारीफ या थैंक्स या ग्रेटफुलनेस एक्सपेक्ट करी ऑन पार्ट ऑफ लेंचो एंड दे डिड नॉट गेट एनी, rather they got the blame of stealing the money. And then where Lencho was expecting the light shower of rain to bring the better harvest this year, the rain got turned to hailstone. As a result, the crop got destroyed. वो भी एक आयरनी है। सो आयरनी पूछती है तो आप लोग एंड वाली सिचुएशनल आयरनी बताओगे, दैट इज आवर मेन वन। ओके, that's it then. If you have any further doubts, do ask me, and tomorrow we'll discuss other chapter. Thank you.